देखिए PRP is a procedure. PRP is a procedure that is done every month. Well, in exosomes, we have an edge that if once your hair fall or the results are achieved, we can repeat it after even 4 months or 6 months. So much. So, मेरे ख्याल में तो जब तक हमने इसके established result नहीं देखे, अभी तक मैंने जितने patients के किए, it's been only 3 months. I cannot say anything with a lot of evidence, क्योंकि हमें evidence चाहिए. We have to prove it with time by doing a lot of patients and by enrolling them into a study. तभी हम कुछ कह सकेंगे. लेकिन new thing in the market, people are loaded with money. There's so many people who wants to go for it. So why should we be reluctant? बाकी डॉक्टर ज़फर अभी बताएंगे तो we all will understand. But I think ये talk मैंने सर की सुनी हुई है. Wonderful talk. Nobody should miss it. And yes, I'm here too. So if anybody wants to ask some questions, I can answer. Dr. Sohail, I would like to add one thing more to your question regarding the efficacy of exosomes in whatever issues, like suppose if you talk about androgenetic alopecia, जब तक आप बेसिक मैकेनिज्म को इनहिबिट नहीं करोगे किसी भी डिजीज का, सपोज आप एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की बात करते हो, आप एलोपेशिया एरियाटा की आप कोई भी डिजीज उठा लें, जब तक आप बेसिक मैकेनिज्म इनहिबिट नहीं करोगे, जब तक आप एंटी एंड्रोजन्स पे नहीं रखोगे, मेरा जाती ख्याल और एक्सपीरियंस है कि एक्सोसोम अलोन, पीआरपी अलोन or whatever procedure alone, it would never work. These are augmentation therapies. They work better in augmentation with the basic medical treatment of the disease. So treat the disease along with exosomes or PRP or whatever other treatment options are there. Like आप कोई मोनोज लगा रहा है, कोई जो है ना आजकल फिलर आया हुआ है, डॉक्टर सिच फिलर, बहुत सारी इस तरह के एक्टिवा रीजनरा. सो यू हैव टू ट्रीट द बेसिक डिजीज फर्स्ट medically, then you have to augment it with exosomes or PRP or something like that. Thank you. जी जी, ये मुझे बताएं कि आप अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ये बताएं कि जैसे एक्सोसोम अभी ज्यादातर इंपोर्ट हो रहे हैं, अच्छा ये क्या मतलब नियर फ्यूचर में हमारे यहाँ पे खुद लोकली मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगे, फिर इसकी ना क्या मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से ये अफोर्डेबल हो जाएगा, और फिर ना इतने बड़ा जो प्राइस रेंज में जो डिफरेंस है ये कैसे मतलब एक स्टैंडर्ड पे आएगा, कुछ ऐसा तरीका, जैसे बहुत बड़ी रेंज है इसकी अगर आप देखें, जाहिर सी बात है. यार डॉक्टर सोहेल, बेसिकली हमें खुद हॉनेस्ट होना पड़ेगा. हम इस रेस में एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए मुख्तलिफ बातें करते हैं, पब्लिक का ओपिनियन बिल्ड करते हैं. हम मीन्स वही डर्मेटोलॉजिस्ट, वही एस्थेटिक फिजिशियंस, वही प्लास्टिक सर्जन्स, हम लोगों को कंफ्यूज कर रहे होते हैं. कभी हम कहते हैं कि ये जो है ना लायोफिलाइज्ड, कभी हम पाउडर्ड एक्सोसोम्स की बात उसको प्रेफर करते हैं, कभी हम फ्रोजन को प्रेफर करते हैं. सो बेसिकली कोई ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि दिस इज मोर सुपीरियर टू दैट ना. और रही बात हमारी लोकल प्रोडक्शन की, आई डोंट थिंक सो कि हम तो बहुत पीछे हैं. हम तो सड़कों से कचरा उठाने के काबिल कौम नहीं है. हम कहाँ पे एक्सोसोम मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगे? तो वो तो बहुत दूर की बात है. अल्लाह वो दिन जल्दी लाए कि हम मैन्युफैक्चरिंग पे चले जाएं. बहरहाल बेसिकली ट्रीट द डिजीज अलोंग विथ दीज सोफिस्टिकेटेड एंड हाई-फाई ट्रीटमेंट्स. प्राइस हाइक्स में बड़ा प्राइसेस में डिफरेंस उस दिन मैं बात कर रहा था ना, लेमन बोतल पे अब 60,000 रुपए लोग खर्च कर रहे हैं पेशेंट्स. और हम अपने कभी दोस्तों की बातों में आ जाते हैं, हम ख्याल रखते हैं ना जाहिर दोस्तों का भी, कभी कोलीग्स की उसमें, तो हमें हॉनेस्ट होना पड़ेगा. अच्छा, यानी मुझे जो बताएं चीज आप मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वो मुझे हाँ, अपने पेशेंट्स के लिए भी पसंद करना पड़ेगा. आप जी जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज डर्माटोलॉजी के उनके सुपरवाइजर भी हैं, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल. ये आप सुपरवाइजर भी हैं, तो मेरे ख्याल में इस मीटिंग में भी बहुत सारे सुपरवाइजर ज्वाइन करेंगे हमें,
और ना ये स्टडीज के लिए जाहिर सी बात है सुपरवाइजर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, उन्हीं के पीजीज होते हैं, तो वो अपने इस तरीके से स्टडीज कंडक्ट करने में वो आगे अपना लीडिंग रोल प्ले कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एस्थेटिक को हमें एविडेंस बेस्ड बनाने की जरूरत है। ये मार्केट के अंदर ये बहुत ज्यादा अभी बहुत इसका एक ना फ्लड आया हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। आपने अगर सुना था, एक दिन व्हाट्सएप हमारे ग्रुप में ये डिस्कस हुआ था और डॉक्टर नीलम ने इस पे बात की थी, व्हाइटनिंग इंजेक्शंस पे, ग्लूटाथायोन पे, कि हमें स्टडीज उस पे करनी है। मेरे ख्याल से इट्स द नीड ऑफ द आवर, इस पे स्टडीज होनी चाहिए। और हमारे जो फिलहाल हम करवा रहे हैं ना, कभी लाइकन प्लेनस पे करा रहे हैं, कभी किस चीज पे करा रहे हैं, इन चीजों पे होनी चाहिए। एक्सोसोम पे कंपैरेटिव स्टडीज होनी चाहिए, रैंडमाइज ट्रायल्स होने चाहिए। और मैं तो इंशाल्लाह सजेस्ट करूंगा, मैं कंडक्ट कराऊंगा। सो हम सबको ये कराना चाहिए। जी बिल्कुल, या जब तक एस्थेटिक मेडिसिन मेडिसिन बिल्कुल ही चले डिफरेंट डॉक्टर सोहेल, स्पेशलिटी नहीं आप बन जाती। कंटिन्यू रखिए, मैं बीच में ज्वाइन करता रहूंगा। जी जी, तो मैडम नीलम आप मौजूद हैं? जी जी डॉक्टर सोहेल, आई एम सॉरी, आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? जी बस मैं यही कह रहा था कि मैडम हमें एस्थेटिक्स के ना सिर्फ एक्सोसोम की बात नहीं है, ग्लूटाथायोन इंजेक्शन की बात है। और मेरे ख्याल में सर जफर ने ज्वाइन कर लिया है, तो चलिए अच्छी अब बात मेरे है, ख्याल में सर के सर से सीखते हैं, डॉक्टर बिल्कुल सजाद होस्ट बिल्कुल। करेंगे। डॉक्टर सजाद इज हेयर, डॉक्टर सजाद इज हेयर जी। जी डॉक्टर सजाद आप कंटिन्यू करें। वीडियो तो नहीं करना ना? हेलो। जी सर आपकी आवाज आ रही है सर, आप जारी रखें सर। अच्छा ठीक है जी। मेरे मेरे स्क्रीन नजर आ रही है आपको अभी? जी यस सर, सर स्क्रीन भी बिल्कुल। नजर आ रही है और आवाज भी आ रही है सर। अच्छा स्टार्ट जी। करें, बिस्मिल्लाह करें सर आप। अच्छा जी। Assalamu alaikum everybody, and I welcome you all to the 13th DAAP program on the online seminars and online training videos. Uh, I am very thankful to the organizers for providing me the opportunity of being a speaker on this forum. And I shall be talking about the use of. Hello, can you hear me? Hello. जी सर, आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, okay जी जी। आ रही है, आवाज आ रही है। Okay, I'll be speaking then. Okay जी, I shall be talking up on the use of exosomes in aesthetic medicine. But before I go on to the exosomes in hair restoration and skin rejuvenation, I would like to mention that the exosomes are really very exciting modality of treatment, especially in not only in the aesthetics but also in the various disorders of internal medicine. One of the professors in USA, who's an immunologist, has very recently written in one of his papers that in the future textbooks of internal medicines, the exosomes will be an important topic in most aspects of the management of various internal diseases. These exosomes are being studied as a system for drug delivery to the areas or to the cellular level. They are being used as biomarkers and for the diagnostic techniques and for the management of different internal disorders. But I shall be focusing my talk purely on the aesthetic aspects of the exosomes. As we know that aesthetic medicine is largely, deals with the human behavior. So one of the human behavior is happiness,
to look younger or look good. And I think most of you would agree that when someone says us that you are looking good, you know, feel elevated. And I hope that all of you do feel same as I do. So going on to the exosomes, because you'll be all using these exosomes, so I would like to give you a little brief account of what these exactly they are. Now, if you look at this extracellular, my arrow is on the extracellular space. You see these tiny little vesicles. These tiny vesicles are actually exosomes. Exosomes are not cells. They are not uh, stem cells as some people perceive it as. Probably they are stem cells. No, they are derived from stem cells, but they are nanovesicles. They are not cellular. Okay. If we go on the right side of this slide, we see a bigger zoom picture of exosome. The exosome is a lipid bilayer. It has two layers of lipids along with huge amount of uh, biologically active ingredients within it. These ingredients, they are like micro RNA, the messenger RNAs, the growth factors, the cytokines, the lipids, and various other peptides. Now they are all, you know, sort of cargo that helps in restoring the functions of other cells. They function as a intercellular communication between the healthy cells and the cells that are disintegrating. Now, if we come to the left side of this picture, we see that these exosomes actually come from the within the cytoplasm. There are microvesicular endosomes. They are found by invaginations or the bulging of the membranes of various cytoplasmic structures, and these bind together to form the microvesicular endosomes. Some of these, they bind with the lysosomes and they are digested, while most of them, they bind with the plasma membrane, and by exocytosis they come out into the extracellular space. Now, this slide repeats what I have already said, and that is the exosomes are tiny vesicles. They measure 30 to 150 nanometers in size, and they are derived from the intracellular multivesicular endosomes, as I have already explained before. When these endosomes, they fuse with the plasma membrane, they release the tiny little vesicles into the extracellular space. And I've already talked about the ultrastructure of the exosomes. It comprises of a lipid bilayer envelope containing diverse biologically active molecules, which include the messenger RNA, the microRNA, proteins, peptides, lipids, growth factors, cytokines, and there are also little fragments of DNA also in some of the exosomes. Now, for particular type of therapeutic indications, these exosomes are genetically engineered. If you look on this picture of exosome, these exosomes have tiny little proteins on the as a cellular on ligands on the surface. These molecules, these receptors, they are actually utilized for recognizing the cells where these exosomes have to work. So let's see the next slide. How do exosomes work? The exosomes are like messengers. They play a crucial role in the intercellular communication. They are like just like we have our delivery systems like TCS and others, you know. So they have specific surface receptors which determine their target cells, to which they bind and enter by endocytic pathway. Now you can see these yellow receptors and the blue receptors. When these
exosomes are manufactured, let's say for the restoration of hair or for the skin rejuvenations, these exosomes would be having receptors on their surface that would specifically bind with the cells in the hair bulb or the keratinocytes or the melanocytes. So they are specifically made or engineered to act on those particular sites of types of cell which we want to target. Once they bind with the cell, they deliver their bioactive cargo to the host cells, and then that cargo or that genetic material drives the cells for their specific repair, regrowth, regeneration, and whatsoever. Now, this slide shows you some of the indications of exosomes. As I've said, that it's not only the aesthetics. In the aesthetic part, we have hair restoration, skin rejuvenation, acne and acne scars, and very recently there is a paper published on which they have recommended exosomes for the treatment of atrophic scars also, and the stria distensa, sorry. The dermatological indications are gradually increasing. People are studying its utility in the management of atopic dermatitis, vitiligo, psoriasis, and few more diseases. And the internal medical issues like cancers, osteoarthritis, cardiovascular disease, wound healing, neurodegenerative disorders, and several autoimmune disorders. I'll show you some of the studies which have been published in year 2023 and 2022. For example, here you can see the role of exosomes in atopic dermatitis. And the second one below is very interesting because it shows that exosomes can repair the cells. It can affect their keratinization of the cells in the epidermis and de novo synthesis of ceramides in atopic dermatitis. When we talk of regeneration, rejuvenation of the skin, we say that these exosomes, they improve the hydration of the skin. So this is how it would do on a normal skin other than the atopic dermatitis, that it will improve the ceramides in the skin and improve hydration of the skin which we are treating. Now, new insights into the treatment of vitiligo and then systemic lupus erythematosus. These are just some of the examples I'm showing that in future these exosomes will be used just like we are using biologics. Now, the therapeutic exosomes, they are derived mainly from mesenchymal stem cells. They are not stem cells, but they are derived from stem cells, and there are three different sources: the adipose tissues, the placenta or the umbilical cord, and the bone marrow derived mesenchymal stem cells. One thing very important about the exosomes is that they should be, once they are manufactured, they should be stored at 2 degrees to 8 degrees centigrade, because if this cold chain is not maintained, they will not remain effective. They are manufactured by harvesting these mesenchymal stem cells, and they are these undergo a lot of ultracentrifugation, and micropurification, so that these vesicles or the exosomes, they are immunologically inert. They don't have any HLA, they don't have any antigens on the surface, and they are completely inert, and they are from the human source, which determines their safety for their use in the human beings. Now, there are about 6-7 different types of exosomes available in Pakistan. And these are photos of some of just 4 of those, but there are few others also. In one of my presentations in the past few weeks ago,
I mentioned that unfortunately, most of the exosomes which are available in Pakistan, they don't mention the concentration of exosomes on their bottles, which is a matter of great concern, because the higher the concentration, more is the effectivity. These ASCE exosome, they theoretically mention, and the PepDiva, they theoretically mention that they have 10 billion copies of exosomes in their each vial. But it's unfortunately not written on their, packings. Anyway, so we'll be first now touching the hair restoration mechanism with the exosomes. Before that, I would like to just show you one of the studies published on exosomes, in which there were two aspects of this study. One was they showed that alopecia of whatever type that may be has a definite impact on patients' psychological and social well-being. So we all know majority of our patients, they are really depressed because when they are losing hair, especially at the younger age. And the International Society of Hair Restoration did a study, which was a survey of almost 12 years from 2010 to 2022. And it showed that there was 152% increase worldwide in the demand for various hair restoration procedures. It was 36% increase in USA and Canada, and 438% in Middle East and Africa. It's a huge number of people seeking hair restoration management treatments. Now, once you are managing hair problems, it's very, very important that you also look into the underlying cause, because if you ignore the underlying cause, you may not be very successful in providing good management to the patient. One is the hereditary, almost 80 to 90% is the androgenetic alopecia, which is hereditary. You cannot do much about it. But if you are able to find out nutritional deficiency, or the patient has telogen effluvium, any hormonal abnormality like thyroid disorder or the polycystic ovaries, any dermatological disorder like psoriasis or seborrheic dermatitis on scalp, or patient is using certain drugs like anti-cancer drugs, or maybe certain thyroid treatment drugs. And psychological stress, another very, very important factor which makes the patient lose hair. So you need to manage, address these all matters also, along with whatever treatment you are giving, whether exosomes or a PRP or just a medical treatment. Now, who needs hair restoration? So this is an easy question. Anybody who's not satisfied with the previous treatment he's being offered, like PRP or hair serums, or oral drugs which we use for hair restoration. So these patients are candidates for switching on to exosome therapy. Those patients who have not even used any other treatment, but they're worried about thinning of hair, they can be straight away put on to this exosome therapy, especially if they don't want very frequent visits. Exosomes is a better choice because you may need to repeat them after 3-4 months. Now, those who are worried about their problematic scalp, I've read this thing that exosomes has a very strong anti-inflammatory effect also, and with that in anti-inflammatory and antioxidative effect, it has a very beneficial effect on patients with seborrheic dermatitis and psoriasis. So if patients are losing hair because of these disorders, they are also the candidates for exosome therapy. And those who want healthy hair because of their poor family history, hereditary aspect of hair loss is there, and they don't want to lose hair, even a healthy man can have 1 or 2 sessions of exosome therapy.
Now, what do we do in exosome therapy for hair restoration? First of all, we reconstitute the frozen lympholyzed dry vial which contains the actual exosomes. You mix with the fluid that is provided with it for dilution. That makes somewhere concentrated solution of exosome of 5 ml. If you have booked a patient couple of days earlier, you tell the patient to come with a thoroughly washed scalp, shampooed scalp, or if you're doing on the same day where the patient has visited, you must clean the scalp thoroughly with alcohol swab so that the hair are all scalp skin is all clean. You inject this concentrated exosome in a small little amount 1 to 2 millimeter deep into the skin at a distance of 1 centimeter apart. You focus the affected area first, and then you move on to the other parts of the scalp. You can also do a little bit therapy with microneedling also with dermapen, but generally for scalp treatment it is given as micro injections. Now, what does it do? Exosomes, they work by stimulating the regeneration and repair of the damaged hair follicles. As I have also said, that they have anti-inflammatory effect, and they also improve circulation, angiogenesis. So all these factors, they sort of get together in improving the quality and the quantity of hair. Now, the benefits of this therapy: it's non-invasive. You don't need knives, you don't need long anesthesia, there is no downtime, and it's not very painful. If you just give a little bit of local anesthesia, the patient will have it very comfortably. It's natural and safe because it's a human derived thing, and it is as I said that its preparation involves a lot of purifications and the ultracentrifugations, so it is immunologically safe. It doesn't it's not a cell, it doesn't multiply, it doesn't cause any side effects, so it's natural and safe. And it stimulates hair growth. That is, all those hairs that are damaged, where the bulb is not showing good anagen hair. So exosomes, they put the hair into the growing phase, into the anagen phase, and they grow better. And at the same time, some of the hair follicles which are dormant, they also get reactivated with exosomes, because the exosomes, they pass on their bioactive material into the dormant hair bulbs, and they have potential of regeneration of the dormant hair follicles. Now, fifth point is that they are versatile and customizable. By this, it means that you can combine exosome therapy with any kind of other things. For example, you want to give finasteride, you want to give oral minoxidil, or you want to give topical minoxidil or topical other hair restoration serums. So you can combine them. You can also combine with PRP. Like if you've given an exosome and you want to give exosome after say about 4 months, the second session, so in between you can do PRP couple of sessions to keep the hair growing. Now, there are frequently asked questions by the patients at times, what is better? Are exosomes better than PRP? The one question in word is that PRP is qualitative, exosomes is quantitative. In PRP, you prepare plasma with the anticipation that it has growth factors and other peptides.
but it is not a calculated amount. You anticipate. It depends upon the patient's health, patient's age, and there are other many factors. Whereas exosomes, they are synthetically prepared, and good exosomes even mention the amount of exosomes, the copies of exosomes present in that particular vial. So this is how the exosomes is better than PRP, but PRP has its own credits and it works. But you do not have more, hassle in exosome therapy. You don't have to take blood. You don't have to centrifuge and do other things which. बोल दो Yeah. हाँ So the second question is, how long do exosomes take to show the beneficial effects? What I have seen is that it's generally the second or third month after the exosome where you see the results, and the full effects are after about 4 months. And that's the time that if you want more results, you have to repeat the exosome. Do exosome regrow here? Yes, I've already said that they regrow. Some of the dormant hair follicles, they also get activated and they regrow. How long the effects last? A month back, there wasn't any study on this thing, but I recently read somewhere that the effects of exosome last like up to 2 years. But there are not, many studies showing the duration of effects of the exosomes, and this is something which we'll learn. Recording in progress. So next is exosome therapy safe? Yes, it is safe because it's a human drive and it's not immunologically, competent enough to cause any untoward effects. So this is one of my patients, hair restoration 2 months after the exosome therapy. I think my view is that it was a good result. So before treatment and 6 months later, the 2 sessions 3 months apart with the exosome. Now we move on to the skin rejuvenation aspect of the exosome, and it is now called exosome facial, also bioregeneration treatment of the facial skin. Now let's see the signs of aging which we see in patients, which we need to treat with exosomes. Receding hairline, forehead lines, frown lines, drooping eyebrows, crow's feet, under eye wrinkles, hollowing of cheeks, skin texture changes, deep nasolabial grooves, sagging, then drooping of the angle of mouth, merit lines, and the chin receding. Now, most of you, treat all these things with different things like fillers or Botox or maybe thread lifts. But exosomes is, for people who don't want too much invasivity, something safe. They don't want too many needles going in. So these are the people whom you can offer exosomes rather than going on to those invasive type of treatments. So this is a slide which I showed once before also. Robert Redford and Demi Moore, down 30 years. They released their movie Indecent Proposal in 1993, and on the left is the photos of that picture, and now this is 2023 photos. So 30 years down. So aging is inevitable, but getting older is inevitable, but deterioration is optional. You can keep yourself as good as possible as long as possible. So it's good to treat yourself. So who needs skin rejuvenation with exosomes? We have already talked about the various signs of aging, and obviously for wrinkles and fine lines, sagging skin, reduced elasticity and dryness, widened pores and decreased glow and vitality. So all these factors, they
are, can be handled with exosome therapy. Now, what is exosome facial rejuvenation? Obviously, you prepare the exosome as we talked about the exosome for hair rejuvenation, but this exosome is different. You cannot use the scalp exosome for the face, so the face exosome is different from the scalp exosome. You mix with the dilution and you prepare the hypertonic exosome preparation for applying onto the skin. By and large, most of the people have used this as topical application rather than injections. But there is one or two exosome vendors who suggest maybe intracutaneous or subdermal injections, but by and large, mostly exosomes are applied on the facial skin before microneedling, and then you apply with microneedling as you do with your PRP. And they can also be used before and after various other procedures like RF microneedling or even with the fractional carbon dioxide laser. So what does it do? A good treatment would reduce fine lines and wrinkles. It will improve skin brightness, improve skin hydration, as I said that it improves skin differentiation and improves the ceramides in the skin, reduction in acne and acne scars, pore size, and there is a noticeable decrease in erythema and severity of rosacea because they also have anti-inflammatory effect. Now, I have seen good improvement in patients' skin complexion. I have also done it in patients who have melasma, and I've seen that if I combine it with other treatments like pico laser or maybe some topical anti bleaching agents kind of creams, the exosomes, they help enhance their effect quite a lot and they improve. This improvement is not by inhibition of the enzyme tyronase. This is because of the anti-oxidative effect of this exosomes. It reduces the production of these free radicals in the skin, and that's how by these effects it improves the skin brightness. Just give me a moment. Okay. So what are the underlying effects which bring about these changes? Exosomes, they have direct effect on fibroblasts and they improve the synthesis of type 1 and type 3 collagen and elastin. At the same time, it also remodels the extracellular matrix, improves the quantity of glycoproteins and glycan in the extracellular matrix, and they improve skin hydration. And as I've already said, it has antioxidant, decreased oxidative stress in the skin. Then it has anti-inflammatory effect by means of the cytokines that are present in the exosomes, and it also improves angiogenesis, new vessel formation, as well as the improved circulation and more nutrition to the skin. So this slide only shows the various type of growth factors that are present: the vascular endothelial cell growth factors, the epidermal cell growth factors, epithelial cell growth factors, the fibroblast growth factors, keratinocyte growth factors, and insulin-like growth factors. But these growth factors are far more. They are just the few main ones which are mentioned on these slides.
So this is one of my patients who had acne scarring, erythema, and pigmentation on his face, and I did microneedling with Exosome, and 3 months after this microneedling, he showed very good results, and pigmentation, erythema, and scar, all the three aspects have improved. Now, this is where I said that I used this Exosome, a patient with melasma, and it was a refractory melasma. She had taken 6 sessions of pico short laser, along with all other modalities of treatment which we all give to the patients of melasma. But addition of this Exosomes, we did 2 sessions and at 3 months apart, and there was a very significant improvement in overall glow of the skin. So this is an additional treatment to the, I wouldn't say that it's a treatment of melasma, but it supports the other modalities of treatment for melasma. So you're never too old to look younger, and so that is a stimulation for offering people the aesthetic treatments so that they feel happy, they look younger. Conclusion: Exosomes are on the horizon of aesthetic medicine as new, exciting, minimally invasive therapeutic tools, and the 4 R's of Exosomes are: they repair, they regenerate, rejuvenate, and restore. Thank you very much. Any questions? If anybody wants to ask, you're most welcome. Not a very lengthy lecture, but I tried my best, whatever I could tell you. Hello? Thank you so much, sir. Ji. Any question? Anybody wants to ask question? सर ये questions कुछ आए हैं सर सुहेल आपको जो है ना एक question करके आपको बता दें. चलें. सर ये काफी ज्यादा एक तो थैंक यू वेरी मच सर, ये इतना कम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिया आपने. बहुत ज्यादा मेंबर ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन ये जूम की रिस्ट्रिक्शन थी 100 मेंबर की, तो उससे ज्यादा ज्वाइन नहीं कर सके. ग्रुप में पूछ रहे थे तो हमने कहा कि रिकॉर्डिंग बाद में शेयर कर देंगे. तो उनने जो क्वेश्चन वगैरह लिखे हुए हैं इधर इसी के इनबॉक्स में ही, वो मैं एक एक करके आपसे सर पूछता हूँ कुछ. सर सर, इज देयर सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन रिजल्ट ऑफ डिफरेंट पेशेंट्स? पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन हैं सर इसकी? जी, पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन है इसमें. जो है ना, एक दो एस्पेक्ट्स हैं इसके. एक एस्पेक्ट जो है वो एक्सोसोम का अपना है कि क्वालिटी ऑफ एक्सोसोम क्या है, और उसकी जो कोल्ड चेन डिलीवरी है उसको कितना मेंटेन किया गया है. जिस वक्त आपके पास वो एक्सोसोम आया है उस वक्त वो उसकी क्या कंडीशन है और उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है. सो एक तो एक्सोसोम का अपना फर्क है, और दूसरा पेशेंट टू पेशेंट भी वेरिएशन है. बिकॉज ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है कि मैंने जिस तरह पेशेंट जो हेयर के ट्रीट किए हैं, सब में मुझे इस तरह का रिजल्ट नहीं आया जैसे मैंने एक ये खातून का दिखाया है. इसमें मतलब कुछ पेशेंट्स 2-3 ऐसे भी हैं who are unhappy because it's a costly treatment, and if they don't get results, they are not very happy. So there is a variation. So clearly there is a variation in patient response. सर एक क्वेश्चन है कि आप कोई गुड ब्रांड्स रिकमेंड करेंगे? देखें, जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये अच्छा नहीं लगता कि वो यहाँ पे हम उसकी बात करें, क्योंकि ये एक ऐसा फोरम है जिसमें हमें जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. तो मेरा ख्याल है कि यस सर, बिल्कुल आई एग्री सर. कि हाउ लॉन्ग द सेशन नीड टू बी रिपीटेड? देखें, जो है ना 4 months इज जनरली द टाइम जब एक्सोसोम को आप रिपीट करते हैं. लेकिन मैंने कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिनको मैंने नहीं ट्रीट किया, लेकिन किसी और ने ट्रीट किया, और उन्होंने मुझको ये बताया कि हमें पहले एक टीका 4 महीने के बाद लगा, और फिर उसके बाद चूंकि इफेक्ट नहीं आ रहा था तो मुझे 3 टीके
किसी डॉक्टर ने महीने के महीने लगाए और मुझे उससे ज्यादा फर्क आया. So if there is no response or less response, you can repeat at an earlier time than the prescribed time of 4 years. But generally, the manufacturers and the text which is published so far says that it needs to be repeated after 3 to 4 months. ये सर किसी ने पूछा है कि थर्ड सेशन इफ रिक्वायर्ड तो ये कब करना चाहिए? उसी तरह 4 महीने के वक्फे के बाद, 3 से 4 महीने के वक्फे के बाद. सर इसका नॉन हीलिंग वुंड में कोई इफेक्ट्स है? नॉन हीलिंग का वुंड का जो है ये फर्स्ट वो है स्टेप जहां पे एफडीए ने एक्सोसोम को अप्रूव किया है वुंड हीलिंग के अंदर. अभी तक बाकी जो ट्रीटमेंट्स हम कर रहे हैं वो ऑफ लेबल हैं. तो वुंड हीलिंग में क्रॉनिक जो ऐसे वुंड्स हैं जो हील नहीं हो रहे होते वो उसमें इसका बहुत अहम रोल है. यस इट इज देयर. सर एक क्वेश्चन है कि आपने मेलाज्मा के लिए यूज किया तो आपने कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट की या फिर सिर्फ यही किया? नहीं, मैंने कॉम्बिनेशन की. मैंने ये नहीं कहा कि ये ट्रीटमेंट है मिलाजमा का. मैं ये कह रहा हूँ कि ये सपोर्ट करता है आपके, क्योंकि जो मैंने पेशेंट आपको दिखाया मैंने इसके 6 सेशंस पीको शोर लेजर के पहले किए हुए थे, लेकिन रिजल्ट नहीं था. मतलब ऐसे ही था कि कभी ठीक हो जाता था 2 महीने और फिर कभी ज्यादा हो गया. लेकिन जब मैंने उसको कंबाइन किया है एक्सोसोम्स के साथ और 2 सेशंस किए हैं 3 मंथ्स अपार्ट, तो उसका रिजल्ट जो है बहुत बेहतर हुआ. पेशेंट हर सेल्फ वाज वेरी हैप्पी कि मेरे, और उसकी वजह से उसका आधा खानदान मेरे पास आया. तो यानी इसका इफेक्ट कॉम्बिनेशन में है, नॉट आइसोलेटेड. ये सर ये डॉक्टर उर्सुला आकिफ हैं, ये पूछ रही हैं कि इसका इफेक्ट है लिगामेंट टियर के ऊपर, इफेक्ट है इसका कुछ? लिगामेंट टियर के ऊपर जो है मैंने पढ़ा नहीं है कहीं पे, लेकिन जहां तक वुंड हीलिंग की बात है तो वहां पे अगर ये कोई यूज करे, मेरा ख्याल है कि आई शुडंट से कि यस बिकॉज आई हैव नॉट रेड इट एनीवेयर. और लिगामेंट्स का के साथ नहीं, अलबत्ता ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसके अंदर इसका रोल डिस्क्राइब्ड है कि उसमें वहां पे ये बोन्स का, लिगामेंट्स का, कार्टिलेजेस का की हेल्थ को इम्प्रूव करता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये इफेक्टिव है. डॉक्टर मोबीन पूछ रहे हैं सर कि डर्मल पिगमेंटेशन में ये वर्क करता है? देखें, जो पेशेंट मैंने आपसे डिस्कस किया है उसको मिक्स्ड मिलाजमा था, ठीक है ना. इट वाज एपिडर्मल एंड डर्मल बोथ कंबाइंड मिक्स्ड मिलाजमा था. तो वहां पे उसकी लाइटनिंग तो हुई है. और जो है ये इसमें जो है अपना एक्सोसोम जो है, इसने टायरोसिनेज के ऊपर इफेक्ट नहीं करना. इसने एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है. अगर आप मिलाजमा की पैथोजेनेसिस में जाए ना तो उसमें लोगों ने ये भी मेंशन किया हुआ है कि जिस तरह हम पहले दूसरे वो चीजें करते हैं ना कि अल्ट्रावायलेट लाइट है या आयरन डेफिशिएंसी है वगैरह वगैरह, तो उसमें जो है ये जो इफेक्ट है फ्री रेडिकल्स का, वो भी इसके अंदर है कि वो हाइपर एक्टिविटी ऑफ द मेलानोसाइट्स को इंसाइट करते हैं फ्री रेडिकल्स. सो व्हेन यू रिड्यूस द फ्री रेडिकल्स तो देयर इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मेलानोसाइट एक्टिविटी, एंड जो हाइपर एक्टिव मेलानोसाइट्स होते हैं वो नॉर्मल की तरफ होना शुरू हो जाते हैं. तो इसलिए ये काम करेगा अगर तो एपिडर्मल और डर्मल दोनों पे काम करेगा. सर ये डॉक्टर तैयबा समर ये पूछ रही हैं कि सोरियासिस और विटिलाइगो में ये कौन से एक्सोसोम यूज होते हैं? उसका जो है ना वो ये वाले यूज नहीं होते जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना. क्योंकि ये तो पब्लिश्ड चंद एक पेपर्स मैंने आपको दिखाए हैं जो कि लोगों ने वो दे वर स्पेसिफिकली मेड फॉर दीज डिसऑर्डर्स. अब फॉर एग्जांपल देखें, एक्सोसोम्स जो है ना, मैंने कहा कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए भी हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी हो रहा है, कैंसर्स के अंदर भी यूज हो रहा है, लेकिन ये सब अंडर स्टडी हैं. और ये बायोटेक्नोलॉजी के साथ जो है ये एक्सोसोम्स फॉर डिफरेंट डिजीजेस, डिफरेंट डिसऑर्डर्स एंड डिफरेंट साइट्स जो हैं वो अलग-अलग बनते हैं. तो मुझे नाम नहीं पता उनके को क्या नाम है उसका जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में या ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज होता है, और ना वो यहाँ पाकिस्तान में भी सो फार अवेलेबल है. ये एक नई साइंस है जो कि अभी डेवलप हो रही है.
तो with time I think people will come to know about it. सर डॉक्टर ताइबा ये पूछ रही हैं कि ये एज ऑल प्रिपरेशन ऑफ एक्सोसोम्स आर वेरी एक्सपेंसिव, हाउ डू यू एडजस्ट इट विद अदर मोडालिटीज लाइक आरएफ पीआरपी? देखें जो है ना, ये जो है पीआरपी का ये है कि अगर आपने सपोज किसी पेशेंट को पीआरपी से एक्सोसोम से ट्रीट किया और आपने नेक्स्ट इंजेक्शन उसको 4 महीने के बाद लगाना है, तो दरमियान में 2-3 महीने आप उसको पीआरपी के साथ कंबाइन कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जो है इसके साथ आरएफ माइक्रो नीडलिंग के साथ जो एक ओपिनियन है वो ये है कि इसके साथ जो जब आप एक्सोसोम्स यूज करते हैं तो एक्सोसोम्स की वजह से इसका जो डाउन टाइम है आरएफ माइक्रो नीडलिंग का या फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड का या अर्बियम यैग का जो डाउन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो उसका अपना इफेक्ट है उसके ऊपर रीमॉडलिंग ऑफ द कोलेजन एंड इलास्टिन एंड ऑल दैट, उसका एडिटिव इफेक्ट है। तो अगर मुझसे अगर आप ये पूछें कि अगर ये जो हम कर रहे हैं एक्सोसोम लगा रहे हैं स्किन पे, ये डर्मा पेन से लगाना जो है ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगा या आरएफ माइक्रो नीडलिंग, तो आई वुड से कि आरएफ माइक्रो नीडलिंग के साथ इसको कंबाइन करने के साथ ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, बिकॉज you are treating the dermal collagen with 2 different modalities at the same time, which will supplement the results of one another. यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर समी ये पूछ रहे हैं मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ एक्सोसोम, तो मेरे ख्याल में वो आपने प्रेजेंटेशन में बता दिए हैं, लेकिन अगर आप सर फिर भी कोई 1-2 अगर सिर्फ मेंशन करना चाहें। देखिए शायद अगर आप इसको एसेप्टिक मेजर्स नहीं सही लेते तो इन्फेक्शन हो सकती है, अदरवाइज कोई ऐसा मतलब मुझे I have not come across any side effect of exosome. यस सर। डॉक्टर आसमा पूछ रही है सर वुंड हीलिंग के लिए कैसे यूज करें, टॉपिकल और इंजेक्शन इनटू द बेस और सराउंडिंग और सम अदर वे? Again, that will be either a different exosome, not the one which we use for routine skin rejuvenation or hair restoration, या शायद अगर हम जो स्किन वाला है स्किन रिजुविनेशन वाला है उसको अगर हम यूज करेंगे तो हम सराउंडिंग वुंड के में ही उसको इंजेक्ट करेंगे, जस्ट लाइक पीआरपी की तरह आप इसको, जिस तरह आप पीआरपी के लिए को भी यूज करते हैं आप वुंड हीलिंग के अंदर, और इस तरह मतलब उसमें जॉइंट्स के अंदर भी पीआरपी यूज होती है, तो उसी तरह से ये एक्सोसोम का भी आप इसी तरह इंजेक्ट करेंगे उसको। सर डॉक्टर आयशा जफर हैं ये पूछें हाउ मच विल इट बी effective on hair transplanted scalp where still hair are deficient in certain areas? hair transplanted scalp में सर कितना affected हो गई? देखें पता है क्या अभी तो जो है ना ये हम वी आर दी बिगनर्स ये तो मिसाल के तौर पे अगर इसके ऊपर कोई बाकायदा स्टडी करे कोई कम से कम 40 या 50 पेशेंट्स की, तो फिर कोई रिजल्ट्स आप स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट दे सकते हैं कि हाँ इसका कितना इफेक्ट है। अभी तो मतलब इंडिविजुअल केसेस के ऊपर है कि किसी पेशेंट के ऊपर अच्छा रिजल्ट आता है, किसी के पास नहीं आता। जिस तरह मैंने ये पहले भी ये बात कही कि देयर इज ए वेरिएशन इन रिजल्ट्स इन डिफरेंट पेशेंट्स। तो अभी सो फार देयर इज नो स्टडी दैट इज डॉक्यूमेंटेड दिस थिंग कि इसका कितने रिजल्ट जो है कितने % में आता है या कितना स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट है इसका। सर डॉक्टर फातिमा पूछ रही हैं कि एनी प्रिपरेशन बिफोर इंजेक्टिंग एक्सोसोम, पोस्ट ट्रीटमेंट केयर, इंजेक्टिंग वाले आओ तो आपने एसेप्टिक बता दिया था, पोस्ट ट्रीटमेंट केयर कुछ ऐसी ऐड करेंगे सर? देखें जिस दिन एक्सोसोम ट्रीटमेंट आपने किया ना, अगर आपने सुबह किया है तो पेशेंट शुड नॉट वॉश हेयर और स्किन टिल इवनिंग। कम से कम 6 to 8 आवर्स जो है वो स्किन को नहीं कुछ छेड़ना ना धोना है, ठीक है। अगर आपने इवनिंग सेशन में किया है तो उसने नेक्स्ट मॉर्निंग में उसने वॉश करना है। ये चीज शायद मैंने लेक्चर में नहीं बताई, लेकिन ये कम से कम 5-6 आवर्स इज द टाइम जो उसके बाद आपने वॉश नहीं करना वो एरिया जहाँ पे एक्सोसोम लगा हुआ है, ठीक है। और जो है
पोस्ट केयर में अदरवाइज और कोई इसके अलावा ऐसी चीज नहीं है। और बिफोर जो है वो यही है कि दे शुड बी गुड क्लींजिंग ऑफ द स्किन और गुड क्लींजिंग ऑफ द स्कैल्प स्किन बिफोर यू इंजेक्ट और यू डू माइक्रोनीडलिंग। सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी भी पेंडिंग क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो और कुछ वर्बली भी खुद पूछना चाहते हैं, तो सर आपके पास अगर टाइम हो आप अलो करें तो फिर मजीद क्वेश्चन पूछें, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप फिर देखें मेरा इस वक्त स्क्रीन के ऊपर वैसे तो जो है ना ये जीमेल का आ रहा है, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, बट आई थिंक एवरीबॉडी हैज माय, चूंकि हम मेंबर्स हैं उसमें पीएडी के और डैप के और ये वो, तो मेरा फोन नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है, तो दे कैन आस्क मी क्वेश्चन डायरेक्टली। मेरा तो अपना गला खुश्क हो गया, मेरा ख्याल है मैंने खाना भी नहीं खाया वो। यस सर, मेरे ख्याल में सर फिर आपको ग्रुप में भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो जब आपके पास टाइम हुआ तो फिर आप उनको कुछ एड्रेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह इट विल बी सर माय मुझे ये प्लेजर टू ज्यादातर आंसर क्वेश्चन एनीबॉडी हु वांट्स टू। सॉरी, ज्यादातर क्वेश्चन डाप एस्थेटिक वाले ग्रुप से आ रहे होते हैं, और सर आप मेरे ख्याल में डाप क्लिनिकल वाले में हैं, तो वो अगर आप कुछ दिनों के लिए 1-2 दिन के लिए भी ऐड हो जाएं वहां पे, तो फिर उनके क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फिर जब आप इजी आप हुए मुझे तो मेरी बात सुने, आप मुझे 1-2 दिन के लिए क्यों ऐड कर रहे हैं? मुझे ऐड कर लें उसके ऊपर। ठीक है सर, मैं मैं आप अलो करेंगे मैं तो आई विल बी अ वेरी साइलेंट मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आई कैन आंसर द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच सर। आज तक जितने भी डाप की मीटिंग हुई है सबसे ज्यादा पॉपुलर लेक्चर ये हुआ, और सबसे ज्यादा डिमांड इसकी थी, और इसी वजह से इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएगी, तो क्योंकि बेशुमार लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। इट इज माय ग्रेट प्लेयर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, ओके थैंक यू, ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। Thank you so much, sir.